Okay, now can you hear me? Yes, kindly. Yeah, this is my So day 13 was about present continuous के जो हम continuous के बारे में बात करते हैं progressive के बारे में anything that is or any sort of work that keeps on going in the present moment कि कोई भी काम जो हो रहा हो सही अभी हुआ नहीं हो complete नहीं हुआ हो जिसमें ना हम future की बात करते हैं ना हम past की बात करते हैं we talk about the present moment so उसके हवाले से we learned a bit of sentences. So yes, first we learned about the affirmative, जिसमें हम is MR and helping verb sorry helping verb हमारे पास is MR होते हैं and along with that we use the main verb ing form. We use the ing form of verb. For example, I am going, they are going, he is going, she is going. And in the negative, we use not right after the helping verb. For example, I am not going, we are not going, he is not going. And as for the question, we always start with helping verb. So in this case, we'll be starting our sentences with is, am, and are. उसके बाद फिर हम subject लगाते हैं and right after the subject, we use ing form of the verb and we continue the sentence. For example, am I going? Are they going? Is he going? Yes, and then we also learned about some sort of verbs to be changed into ing form. We were also given some examples, and also there are three types of three functions of present continuous. The first one is to show something happening now. कि कोई भी चीज जो उसी लम्हे हो रही हो उस काम के बारे में हम जब बताते हैं we show it through present continuous or present progressive. The second function is के to show longer actions in progress now temporarily के जो longer actions हो रहे होते हैं सही तो उसके बारे में भी बताने में हम क्या करते हैं present continuous use कर रहे होते हैं. And the third function is to express a planned action in your future. कि आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तो उसमें कि आगे आने वाले वक्त में कौन सा बंदा क्या काम करेगा. So we also can use present continuous for such purpose. Okay, and also you then narrated situation around yourself, or you also narrated these two pictures, actually describe these two pictures using present continuous. Then we also learned a bit of examples about the three functions of present continuous or can we report and news reporter के हवाले से you did all of you did such a great role play activity. अच्छा then we also learned कि इसमें जो है ना always का हमारे पास क्या importance होती है when we use always in these sentences so we show actually irritation. हम दिखाते हैं कि कोई बंदा किसी चीज से तंग हो रहा होता है जब वो always use करता है present continuous के sentences में. For example, she is always coming late to the class कि वो क्लास में हमेशा देर से आती है. Right? So yes, and we also learned some of the verbs with which we cannot use ing form when we are using these in present continuous. Okay, and then yes, ये तो activities ये तो मैंने आप लोग के लिए छोड़ दी थी. And we also learned about obligations. See, and we have actually two types of obligations. One is should and the other is must. तो should क्या है ये by the way what is obligation? Obligation मतलब कि कोई भी काम जो जरूरी हो जिसको करना या जरूरी हो या जिसको ना करना जरूरी हो सही. And when it comes to should, so we learned that should can be used for advice as well as mild obligation, while must is only used for stronger obligations. किसी चीज से जब हम सख्ती से मना करते हैं या कोई काम जब हम सख्ती से करने को बोलते हैं so for that purpose we use must. And also we learned a bit of examples and did some activities regarding that. Okay, now sharing the screen of your day 14 with you. Present simple. Okay, so present simple इसमें भी इसके दो तीन functions हैं and one of its general function is habitual actions. Okay, we show our habitual actions using present simple. अब present simple क्या होता है इसमें भी present की ही बात की जाती है सही. So we also did the recalling and now talking about habits. Say because this whole class is going to be a bit about habits, surrounding habits. So yes, my question from you is, what are your positive daily habits? ऐसे वो कौन से काम है जो daily basis पे आप करते हैं and you actually kind of like it? Yes, so who would like to go first? Kindly raise your hands. So, yes, Miss Aisha.
Yes, sir. First of all, my positive habits, I'm used to pray 5 times. I recite Yes. Quran and I take care of my family. I make food for them. I'm kind-hearted. Yes, yes, but could you, because kind-hearted is something that is a characteristic. I am talking Okay. about habits, like you told that you read Quran and you pray 5 times a day. Yes. So what else do you do on daily basis, or perhaps on 2 to 3 days? Hmm. Yeah. Sir, I think it's enough. अपने मुंह मियां मिठू बनना. Okay, okay, Charan, thank you very much. Yes. So thank you very much, Miss Aisha. Okay, going ahead with Miss Rosaila. G. Okay, sir. First of all, I follow all the duties that are given to me. For example, there could be by my family, by my mother, and I I always motivate myself that I should do better today than yesterday. That, for example, if I give up my 7% tomorrow, I have to give up my 10% today, and I try my best to spend my day productive, like in a productive way. Yeah, yeah, that's great. That's great. Improvement is better. Yes, growth is better. So thank you very much, Miss Rosaila. Yes. Now, Mustafa, kindly could you tell us regarding your positive daily habits? Yes, sir. Assalamu alaikum. What is no? How are you, sir? Alhamdulillah, I'm doing great. What about you? Alhamdulillah, shukr. बिल्कुल ठीक ठाक. Great. जी, That's great. sir. Gee. So, I pray for time for 5 times a day. I pray yes, five great. times a day. I read a And paper daily basis. great. I I watch TV for news. I do exercise daily, Great. cycling, and occasionally cooking. No, yes, yes, yes. These are some very healthy and productive habits, both for the body and for the mind. So, yes, Yeah. thank you very much, Mr. Thank Mustafa. you. Yes. Thank you, sir. Yes, Mr. Usman, could you tell us your daily habits? Okay, for now, I'm going with ahead with Ansar. G Ansar. Ansar, can you hear me? जी सलाम सर. वालेकुम सलाम. तो अंसार, आप मुझे अपनी आदतों के बारे में बता सकते हैं, ऐसी कोई आदत जो कि आप हर आए दिन रिपीट करते हैं? जी. But try to speak in Sir, English. जी. Yes. I am early morning in exercise, Great. and I am going to 7 a.m. Work job. Great. Great. Yes. And tell me one more. एक और बता दो, एक और. Then uh, uh, I am focused on duty. Okay, okay. So you perform your duty on daily basis. That's great. Can you, yes, that's more than enough. Thank you very much, Mr. Ansar. Yes, now going towards Usman Habib. Yes, Mr. Usman. Am I audible to you now? Okay, okay. चलो ठीक है. You may reply to me, or you may text me anytime when you're free and when you are able to answer. Thank you very much. Okay, now coming towards the vocabulary. For this one, I am unmuting all of you. Kindly unmute yourself and repeat every word after me. Yes, sir. Yes. So the first word is terminate. 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 Yes. Terminate मतलब खत्म करना. सही. So
Federal Board has decided to terminate all the exams in which students cheated. कि फेडरल बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, ये फैसला लिया है कि वो सारे पर्चे खत्म कर दे जिसमें स्टूडेंट्स ने चीटिंग की है. सही? Sir, can we Yes. use that the train will terminate at England? Yes, you can use it as that for that as well. Yes. Because you see, one word may have many meanings depending upon the context. क्योंकि हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. You also know what context is according to Yes, the yes. setting and yes, according to the paragraph in which it is written. सही, so उसके मुताबिक अल्फाज अपने माइंड थोड़े बहुत चेंज भी करते हैं. Okay, Yes. sir, thank you. My pleasure. Okay, so the next word is delusion. Delusion. Yes, delusion means Farid or Boka, you can say. Anything that may not be real, but it seems like real. Right? So that is called delusion. या किसी को धोखा देना भी मतलब कि when someone shows you that that person is good but innately he wants bad for you. कि कोई इंसान जब बहुत ही ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करता है लेकिन उसके दिल में बदनीयत ही होती है. So he or she is actually trying to show you delusion. वो आपको फरेब दे रहा होता है, धोखा दे रहा होता है. सही? So people can show you delusion but may not want good for you. कि लोग ये भी लोग आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन वो क्या सॉरी लोग आपको अच्छा बनकर दिखा सकते हैं लेकिन वो जो है ना नियत के अच्छे नहीं होते, वो धोखा देना चाहते हैं, फरेब देना चाहते हैं. सही? So the next word is stubborn. 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 Yes, stubborn. Stubborn means ziddy. Right? So kids nowadays or children nowadays are very much stubborn. They keep on crying for their mobile phones. कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, वो अपने फोन के लिए या मोबाइल फोन के लिए रोते रहते हैं. The next word is majestic. Majestic. Yes. So buildings in 18th century used to be majestic. कि majestic means शानदार. कि 18वीं सदी में बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा या इमारतें बहुत ही ज्यादा शानदार हुआ करती थी. The next word is rubble. Rubble. Yes. Rubble. Yes, rubble means अच्छा मलबा. Yes, मलबा. Now what is rubble? Rubble इसको कहते हैं कि when a building is broken or due to earthquake, तो क्या हो जाता है, कोई जलजला है, कोई भी बड़ी आफत जब आती है ना, तो कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो या घर हो तो वो टूट फूट जाता है बिल्कुल. तो उसमें से क्या है वो जो ईंटें वगैरह बच जाती है, सीमेंट वगैरह चूना वगैरह गिर जाता है सारा. सो वो जो गंद रह जाता है ना उसको कहते हैं रबल. सही, वो बिल्डिंग के गिरने से जो गंद बन जाता है सारा. So earthquake caused a lot of buildings to be turned into rubble. तो earthquake की वजह से, जलजले की वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारी इमारतें मलबे बहुत सारी इमारतों से मलबा बन गया. सही. The next word is casualty. 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 Casualty means जानी नुकसान. सही. So robbery caused at least 3 casualties. कि चोरी की वजह से 3 जानी नुकसानें हुई. सही. Okay, the next word is venture. Mine. Venture. 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 तो वेंचर का मतलब मुहिम. नाउ व्हाट इज वेंचर? वेंचर कोई भी इस तरह का, ये आप किसी काम को भी कह सकते हैं या फिर आप एक्चुअली इट इज अ वर्ड. जो एडवेंचर वर्ड है वो वेंचर से ही निकला है. एडवेंचर कहते हैं ना कि व्हेन वी गो समवेयर फॉर फन. बट वेंचर क्या है? इट इज अ बिट ऑफ रिस्की वर्ड बिकॉज इसमें जो है ना थोड़ा सा रिस्क शामिल होता है. व्हाटएवर यू आर डूइंग बट व्हेन इट इंक्लूड्स रिस्क दैट इज कॉल्ड वेंचर. सो इन सर ओल्डर वो जो टाइम्स. पोलियो में मुहिम होती है उसको भी वेंचर बोलते हैं. जी. वो जो पोलियो मुहिम शुरू करते हैं और नो डिफरेंट दैट स्टैंड. नहीं, उसको वेंचर नहीं, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड होता है. राइट नाउ वो मेरे जहन में आ नहीं रहा. बट दैट इज नॉट वेंचर. वो वेंचर नहीं होता. सही. बिकॉज वेंचर में क्या होता है, यू कैन से कि sailing in olden times used to be a venture because of the pirates. कि पुरानी जमाने में समंदर में कश्ती चलाना बहुत ही बड़ी एक मुहिम होती थी या एक खतरनाक काम भी कह सकते हैं कि एक खतरनाक काम होता था क्योंकि क्या है कि समंदर में पायरेट्स हुआ करते थे. नाउ एनी आइडिया टू एनीवन हु वर पायरेट्स? जी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ पायरेट इज? पायरेट क्या होता Yes. है?
Yes, sir. Yes, yes, Bahri Kazakh. yes, very color. Could you explain it? बहरी कजाक मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं. एग्जैक्टली समुद्री लुटेरे वही बताओ जी. समुद्री लुटेरे मतलब कि समुद्रों में जो क्या करते थे, दूसरों की कश्तियां भी कर सकते थे. सही. So and the last word is envy. Yes, Envy. envy. जी. Envy. Okay, envy means हसद. सही. In simple words हम इसे jealousy भी कहते हैं, किसी से jealous होना है, किसी से हसद करना. So people nowadays, poor people nowadays envy rich people. कि गरीब लोग अमीर लोगों से हसद करते हैं. सही. So yes, let's go with the activity where you will have to use these sentence words in your own sentences. For now, I'm muting all of you. Yes, so Mr. Zyla, could you may pick any 3 to 4 words and change those into your own sentences. Only 4? It's up to you. If you want to use more, you can use it. Okay. First of all, I will be making the sentence of terminate. You may terminate the agreement by giving 1 month notice in writing. The walls are rubble and Yes. sand infested with insects. Mhm. May I Yes. venture to add a few comments on this post? They stared at her purchases with envy. Yes, and you John are can finishing be the recording? just stubborn as times. Okay, and you are Uh, dropping the pay kindly please I, bता दें. I Yes. said they stared at her purchases with envy. Envy. Okay. Thank you. Yeah. Good. Yes. Okay. So thank you very much, Mr. Rala. Yes. Now, Mr. Mustafa. जी. जी सर. तो इनमें से कोई सी भी 3 से 4 वर्ड्स का सेंटेंसेस बना. Yes, sir. Terminate. Yeah. Government has all subsidies terminated for the public. Okay. ठीक है और सर. इनमें से कि government has terminated all the subsidies for the public. जी सर. सर पहले हमने वर्ब यूज नहीं करना था. नहीं, एक बार याद यूज करें. जी. ठीक. एक बार चलो याद ठीक यूज है. करें. जी. Delusions. When you go world, so you find delusion everywhere. ठीक है सर. Yes. 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 जी. Stubborn. I was stubborn. Stubborn. जी. Now. Stubborn कब से बता दें. Hello, sir. Yes. I was a stubborn person, but now. अब नहीं. Okay, but not now. Not I now. was a stubborn person, but not now. Yeah, not anymore. ठीक. जी. Majestic. But not now. Sir, majestic. Majestic. Yeah. We Muslim has a Muslim was sorry was a majestic past. Yes, we Muslims had a majestic past. ये हमारा ठीक सर. हुआ करता था. We हाँ, बाकी Muslim was the जी. We Muslim was the was the majestic past. had line had कि हमारा past हम हुआ मुसलमान करता रखते थे शानदार माजी. था. जी. जी. And सर तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, कुछ कहने में मुश्किल भी हो रही है. सही है चलें इसको. हेलो. Okay. Yes. I think yes, that is जी. more than enough, Mustafa ji. चलें. Thank you very much. Asha, yes, Mr. Osman, that is a nice question. I read it earlier. Okay, what is the difference between illusion and illusion?
अच्छा, illusion और delusion में क्या फर्क होता है? Delusion in most of the times ये जब आप किसी और को धोखा देते हैं या फिर most of the time जब इंसान खुद ही धोखे में रहता है तो उसको हम delusion बोलते हैं, सही। लेकिन जब आप ये किसी और को एक धोखा दिखाते हैं जो कि रियल नहीं होता, सही है, लेकिन वो किस लिए होता है? वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। वो मतलब इंसान का क्या होता है कि इंसान देख एक चीज रहा होता है बट दैट इज नॉट रियल, सही है। सो दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। So let me write it down here for you. So yes, we can also say कि delusion is actually the creativity of one's own mind, जिसको हम कहते हैं ना अक्सर ये गलतफहमी या खुशफहमी भी कहते हैं। So that is also called delusion, सही। While illusion is the creativity of someone else's mind, जब कोई और जो है ना इस तरह का आप लोग को खैर कोई और जब गलतफहमी को खुशफहमी के सेंस से नहीं, बट कोई और जो है ना आपको धोखा दिखा रहा होता है on purpose, so that is called illusion. Okay, yes, now coming to your Miss Aisha. जी, Sir, first word is terminate. His yes. contract was terminated last month. Mhm. And delusion mean fraud. It took me 15 years to realize that it was a tragic delusion. Mhm. And majestic, Yes. she always used to wear majestic dresses. Yes. And rubble, we have pay lot of money to collect rubble in front of my house because we are renovating our house. Mhm. Okay. So And let me casualty, there was no casualty जी, because of fire. Alhamdulillah. Venture Mohim, Mhm. we ventured out into the woods. Good, good. Yes. And stubborn, my kids are not stubborn. They have very good. They are very obedient. Mhm. And Envy, 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 envy. envy. Yeah. Envy. To envy is a very bad habit. Good. To Okay. Thank you very envy much. to someone is very. Yes, sir. Yes. Yes. To envy someone is very bad habit, you can say. Very bad habit. Yeah. Okay. Thank you very much. Yes. Now we'll go towards Miss Madiha. जी, Miss Madiha. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Yes, so you How have to are use you? these words in your own tenses. So first word is terminate, khatam karna. The company decided to terminate the contract due to non-payment. Yeah. Second word is delusion. Delusion. Yeah. Brave. Brave. She was suffering from the delusion that she was being followed everywhere she went. Good. Next word is stubborn. She was stubborn means ziddi. She was stubborn and insisted on doing things her own way. Next, majestic. The majestic mountain towered about us. Majestic mountain. Yes, sir. Yes, the majestic mountain. अभी क्या कहा आपने? Towered about us. और इसका मतलब? हमारे ऊपर शानदार पहाड़ थे. अच्छा, सही सही सही. Good, good. Next, rubble, Malba. The ancient city was reduced to rubble by the invading army. Okay, sir. Good. Yeah, Uh, good, good.
Causality, Casualty. casualty. The medical team worked tirelessly. The team that treat the causal. सर ये वर्ड नहीं आ रहा. Casualty मतलब कि जानी नुकसान. कहीं कुछ हो नहीं जाता सर, है ये जी. वर्ड बोलना नहीं आ रहा. Of the अच्छा, bombing. चलिए Causal those were the ventures. of the bombing. Okay. Venture, Correct. venture means mehem. जी. The friends decided to venture into the unknown city. Okay, wait, name. The last one. Envy, hasad. She felt a pang of envy when she saw her friend's luxury new car. Okay, good. Those were some great sentences. Okay, now, yes, Ansar, Mr. Ansar. वालेकुम सलाम. अच्छा मिस्टर अंसार, कोई से जो है ना 3 वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाएं. Terminate. Ali is a terminate on government job. Then issue was behavior. Good, good. Yes, frame. Ahmed is a delusional man. Delusional. उसे आप कहेंगे कि Ahmed is a delusional man. Delusional. Today on in Islamabad, Sudan, Sudan, कौन सा वाला बना रहे हैं आप? जैसा ये कैशुअलिटी वाला. Casualty. सही सही. सदी आग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? किसको? आग को सदी. आग बड़ा फायर. कुछ है. फायर. आग को फायर कर. Today in Islamabad, Sudan fire. Yes. जी. Sudan fire. And Sudan fire. Majestic. जी. Majestic. Majestic. शानदार. Majestic. Majestic जी. Aslam is a new shop and Majestic. Yes, you can say that Aslam has a new Majestic shop. जी. Aslam has a new shop Majestic. Majestic. Yes, good. Inshallah, I think this is more than enough. आगे अभी जाते हैं जी, going towards phrases जी. Thank you very much, Ansar. Okay, now on to the phrases. So we have 4 phrases again. The first one, walking disaster. Walking disaster का मतलब कि चलती फिरती तबाही. She's a walking disaster. Whenever she steps, wherever she steps, havoc wreaks. Havoc wreaks का मतलब कि तबाही मच जाना. सही कि वो चलती फिरती तबाही है या आफत है. Wherever she steps, जहाँ कहीं भी वो कदम रखती है, havoc wreaks, तबाही मच जाती. The second one is
lower your gaze. निगाह नीची रखना या निगाह छुपा देना, छुपा देना. You should lower your gaze before the king. बादशाह के सामने आपको अपनी नजरें झुका देनी चाहिए. The third one is reading between the lines. Okay, reading between the lines का मतलब ये है कि कोई चीज गौर से पढ़ना. Now ये हम बुक्स में एक reading technique होती है. This is one of the reading techniques that we use while reading. आप बुक्स पढ़ते हैं या आप जो है ना किसी के मैसेजेस जब पढ़ते हैं, अक्सर किसी की बात जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, अक्सर होता है ना कि इंसान एक बार डायरेक्ट नहीं कहता, सही है, वो आपको इनडायरेक्टली एक बात कहना चाहते हैं, वो मीनिंग कन्वे करने के लिए दी जाए सर्कमस्टांसेस को. उसको क्या कहते हैं, जब आप उसकी बात समझ जाते हैं कि उसने बात एक कही होती है लेकिन मतलब कुछ और होता है, जो मेन मतलब होता है आप उस पर पहुंच जाते हैं. सो इट मीन्स कि यू हैव रेड बिटवीन द लाइन्स, कि आप उसकी बात पर आपने गौर किया और आप समझ गए. So if you read between the lines a little, you'll find him lying. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप उसे झूठा पाएंगे. And the last one, in the nick of time. In the nick of time मतलब कि आखिरी लम्हा, बिल्कुल आखिरी, इसलिए हम कहते हैं कि आखिरी सेकंड में. So I reached school today in the nick of time. मैं आज आखिरी लम्हात में स्कूल पहुंचा. So yes, I want you to make sentences out of these as well. Yes, Miss Aisha. Yes, sir. Walking disaster. You broke all the things around you. You have a majestic disaster. Majestic में you are a walking disaster, you can say. जी. Sorry, I didn't get you. आप कहें मैजेस्टिक डिजास्टर ना कहें, आप कहें कि यू आर अ वॉकिंग डिजास्टर. You are a walking disaster. वॉकिंग डिजास्टर. Okay, you are a जी. walking disaster. And last one, the nick of time. In He the nick of always, time. जी. in the nick of time, he always used to do every assignment in the nick of time. Good, good. जी. And अगर थोड़ा सा और करें तो आप झूठा पाएंगे. If you read between the lines, if you read him between the lines, then you will realize how much he is sincere with you. Good. And lower your Yes. gaze. You should lower your gaze when you are walking around the females. Okay, good. Thank you very much. Yes. Miss Madiha. जी. Yes, sir. The first is walking the disaster. Yes. He is a walking disaster, always getting into trouble. Yes. Next, lower your lower your gaze. Lower your gaze. Modesty is a virtue. Read between the lines. Read between the lines. There is more to this message than meets the eye. In the nick Read of between time. the lines आगे. जी. Yes, sir. ये read between the lines, ये वाला दोबारा से पढ़ें जरा. Sir, read between the lines. दोबारा सुनो. जी. जी बिल्कुल. Okay, sir. Read between the lines. There is more to this message than meets the eye. Okay, okay, great. जी. Last one. In the nick of time, the ambulance arrived in the nick of time, serving the accident victim's life, saving the accident victim's life. Okay, great. Thank you very much. Yes. Ms. Fazaila. Sir, I just wrote the sentences in the chat box. Oh, yeah. See you. Thank you very much. Yes, I'll go with them. Mustafa. जी सर. जी Mustafa. Sir, first, she is walking disaster. Our neighbor's lady, walking disaster. She goes everywhere to bring a big loss. Okay, good. You should pray. Sorry, you should lower your gaze. When you pray, offer pray. Good.
And read between the lines. And third one, Yes. if you read between the lines a little, you will find him a thief. Okay. Okay. And the last one, in the nick of time. Sir, I reached school today in the nick of time. सर इसका बनाया नहीं, मैंने सोचा नहीं. चलो ठीक है, चलो 10 मिनट लेना. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. My pleasure. Okay, yes, अंसार. अंसार कोई से दो जो है ना इनमें से पढ़ो. If you want to. जी अंसार, आवाज आ रही है आपको मेरी? Okay, for now, you can see ahead. Yes, now towards the main topic, present simple tense. Right? So present simple tense में क्या होता है कि यहाँ पर अच्छा वो हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो है ना वर्ब की अलग थोड़ी सी फॉर्म्स लगाते हैं. आई हो गया, वी, यू, वे, या फिर प्लूरल हमारे पास जो नाउन्स हो गए हैं ना उनके साथ हम एस या ई एस फॉर्म नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल वे प्ले, I play, we play, you play, students play. While with singular noun and with he, she, it, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? हम इनके साथ verb की s या es फॉर्म लगाते हैं. She plays, he plays, it plays, Sarah plays. सही. तो ये जो है ना, और फिर आगे जाके आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, सारा प्लेज फुटबॉल. इस तरह. Okay, we are also given few examples here. I wash my face every day. और इसमें क्या बताया गया है? डेली रूटीन की चीजें बताई गई हैं कि जो भी वो है सेंटेंसेस हैं, ये रूटीन के सेंटेंसेस हैं. सही. कि लोग जो है ना किस तरह रूटीन में क्या क्या काम करते हैं. और रूटीन का मतलब ये भी नहीं कि डेली बेसिस पे. डेली भी हो सकता है, वो हफ्ते में एक दो बार हो सकता है, हर हफ्ते एक दो बार, या महीने में दो तीन बार हो सकते हैं, एक बार हर महीने में एक बार, लेकिन लास्ट में. सही. सो The first example, I wash my face every day. कि मैं रोज अपना चेहरा धोता हूँ. सही. रुमेशी cleans her room once a month. अब ये काम क्या है कि महीने में एक बार हो रहा है कि रुमेशी अपना कमरा महीने में एक बार साफ करती है, मतलब कि हर महीने वो कमरा साफ करती है. So the Christians go to the church every Sunday. कि हर संडे, हर इतवार क्रिश्चियन ईसाई चर्च जाते हैं. या Muslims go to the masjid to pray Friday prayer on every Friday. कि हर जुम्मे मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं. सही. So our students attend online classes every other day. कि हर आए दिन हमारे स्टूडेंट जो है ना वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं. तो ये क्या है, आप लोग ये नीचे देख सकते हैं. यू हैव गिवन अ टेबल जहां पर लिखा गया है कि डेली, एवरी डे, नाइट, फ्राइडे, वंस अ मंथ, वीक. तो ये सारे मुख्तलिफ फ्रेजेस भी आप यूज कर सकते हैं टू शो कि कौन सा काम दिन में या कितनी बार होता है, या हफ्ते में कितनी बार होता है, या जो है ना वो महीने में कितनी बार होता है. सही. ओके. दीज आर, अच्छा ये जो ऊपर वाला था इट इज कॉल्ड डेफिनेट टाइम. नाउ इनडेफिनेट टाइम के बारे में. अच्छा डेफिनेट टाइम में क्या है कि मतलब कि हमें एक अंदाजा होता है कि कोई काम जो है ना वो कितनी बार हो रहा है या किस वक्त हो रहा है. Yes, yes, unmute your hand, Mustafa. जी मिस्टर मुस्तफा. Sir, actually, I wash my face every day. जी. पर ऊपर लिखा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा, फिर वाश्ड होना चाहिए ना. अच्छा चलिए, ये जस्ट मे बी इनकरेक्ट, लेट मी जस्ट मेक इट राइट. ये सेकंड नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है. सही है. यहाँ पर देखो V1 कर देते हैं इसको. सही. सर ये करेक्ट नहीं है इस तरह वर्ब टू. नहीं वर्ब टू तो फर्स्ट नहीं फॉर्म है, यूज. क्योंकि जी क्योंकि वो जो वर्ब टू होता है ना वो फिर हमारे पास पास्ट सिंपल आ जाता है. लेकिन हमारी क्लास में है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट के बारे में, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट. सही. तो ऑल ये सही है, सब्जेक्ट वर्ब की फेल फॉर्म जी और जी ये सही बाकी. है. जी जी ठीक. exactly. थैंक यू. ठीक है. Yes.
यस हाँ मिस आयशा, मैं थोड़ा सा इस पे आप लोग को डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के हवाले से समझाऊँ तो देन मैं आप लोग को चांस दूंगा ये सेंटेंसेस करने का। ओके, नाउ फर्स्ट कमिंग टुवर्ड्स डेफिनेट टाइम, कि डेफिनेट टाइम क्या होता है। इंडेफिनेट टाइम आप लोग को ये पता होता है या स्पीकर को ये पता होता है कि कोई काम दिन में कितनी बार होता है। कोई काम डेली होता है, रोजाना, एवरीडे, हर आए दिन, नाइट सिर्फ रात को होता है, या सिर्फ जुमे वाले दिन, ये महीने में एक बार होता है, या हफ्ते में एक बार। अब जब इनडेफिनेट टाइम के बारे में व्हेन यू लिसन तो यू विल अंडरस्टैंड कि द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइम। सो नाउ हियर इज द इनडेफिनेट टाइम, ये जो राइट साइड पे दिए गए हैं ना, दीज आर ऑल द फ्रेज ऑफ इनडेफिनेट टाइम। अब कोई काम है ऑलवेज होता है, हमेशा होता है, सही किस टाइम होता है वी हैव नो आइडिया। अच्छा ऑफन कभी कभार होता है, कभी कभार में चले, अच्छा ऑलवेज में और डेली में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट आई थिंक ये ऑलवेज जो है ना वो डेफिनेट टाइम में होना चाहिए, इंडेफिनिट के बजाय। खैर इससे हटके जो बाकी हम देखते हैं ऑफन या ऑफ्टन, यू ऑल्सो यू कैन प्रोनाउंस इट एज बोथ ऑफन एंड ऑफ्टन। सो ये ऑफन जो है कि इसके बारे में क्या कि अब कोई काम है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट हैपन, वी हैव नो आइडिया कि ये काम दिन में कितनी बार होता है, हफ्ते में कितनी बार होता है, उसका नहीं पता चलता। सी सो आई ऑफन ड्रिंक कॉफी, कि मैं बाज़ औक़ात कॉफी पीता हूँ, और बाज़ औक़ात में क्या है, कभी मतलब इसमें जो है ना एक असल में एक डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता है। नाउ यूजुअली या नॉर्मली, सही, आम तौर पर, तो शी यूजुअली क्लीन्स हर रूम, वो आमतौर पर अपना कमरा साफ करती है। अब आमतौर पर क्या मतलब है कि ज्यादा बार तो हो रहा है, बट ऑन व्हाट डे इज इट हैपनिंग, या हफ्ते में कितनी बार हो रहा है, वी हैव नो आइडिया ऑफ दैट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडेफिनिट टाइम, इसे इनडेफिनिट टाइम कहा जाता है। इनडेफिनिट का मतलब कि वो चीज जो कि क्लैरिफिकेशन जिसकी ना हुई हो, क्लैरिफाई ना हुई हो, वो क्लियर ना हो, क्लैरिटी ना हो इसकी, सही। अच्छा समटाइम्स कभी कभार, ओकेजनली, ये कोई भी जब कोई खास मौका हो तो तब वो काम होता है, सही। सो ये स्टूडेंट्स ओकेजनली स्टडी इन द हॉस्टल, यू कैन से कि ओकेजनली जब भी कोई मौका होता है, फॉर एग्जांपल पेपर या टेस्ट, तो स्टूडेंट तभी जो है ना स्टडी करते हैं हॉस्टल में। रेयरली, बहुत ही कम, या नेवर, कभी नहीं, सही। यस मुस्तफा जी। सर हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेफिनेट टाइम एंड इनडेफिनेट, यकीनी टाइम और गैर यकीनी टाइम। यस आप इस तरह भी कह सकते हैं यकीनी, क्योंकि हमें यकीन होता है कि काम जो है ना कितनी बार होगा, और गैर यकीनी हमें उसका यकीन नहीं होता या पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता, इस तरह भी आप कह जैसे सकते हैं ये जी। ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, नेवर, ये या सब इसमें इंडेफिनाइट में आता है। एग्जैक्टली, ये सारे इंडेफिनिट में, वाइल प्रीवियस में पिछली स्लाइड दिखा दूं आपको, ये जो थैंक है यू सर। डेली, एवरीडे, नाइट, तो ये सारे डेफिनेट टाइम है जी। Okay, so थैंक yes, yes, my pleasure. Okay, yes, now Miss Aisha, towards the question, तो आपने sorry, towards the sentences, तो आपने क्या करना है, एक सेंटेंस जो है ना, you have to use definite time, एक या दो sentences, और इस तरह एक या दो sentences बनाए, but in indefinite time. Okay, sir. Yeah, I pray 5 times a day, or I pray every day, so ये good, yes. and mm, my my kids go to school every day, Okay, and now about and we eat. indefinite time. Okay, जी, yes, yes, I often I often eat pizza, or I often go outside for dinner. okay, And she usually goes to her mom's house. good, good. Okay, Sunil, thank you. Yes, now Miss Madiha, जी, जी मिस मदिहा। So इसमें से एक या दो sentences indefinite time के बना, and make one or two sentences that of the definite time using the phrases of definite time. जी, सर डेफिनेट टाइम का बनाना है। exactly, आपने चलिए एक ले लें, एक सेंटेंस आपने indefinitely जो phrases दिए हैं ना, इनको यूज करना है सेंटेंसेस में, और दूसरे में आपने indefinite को यूज करना है।
I can spend time every day. यस, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मिस मदिया। I can spend time every day. यस एंड आवाज आपकी बहुत ही ज्यादा स्लो है। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी अभी आ रही जी। I cook food time every day. Yes, and indefinite time. Indefinite time. सारे phrases दिए गए हैं ना आपको, always, often, usually, normally, sometimes, occasionally. Yes, Miss Madira. जी सर मैं कोशिश कर रही हूँ। okay okay चलिए, meanwhile I'll ask Mr. Usman. जी Yes, sir. So I submit homework 3 days ago. I usually submit my homework to my teacher. good. So you conduct the class, English marathon class daily, Yes. or you conduct the class at 8 p.m. Yes. That is also definite time. So Yes, sir, definitely. indefinitely जी ये दोनों डेफिनेट होंगे, डेली और 8 p.m. सही। ओके चलिए, okay, ठीक है मिस्टर उस्मान। यस Rosaila. जी मिस Rosaila. Okay, Okay, you just gave the sir. sentences. Okay, I can speak it then. Yeah, I just saw those sentences. Yeah. First of all, the definite ones. He goes to school every morning. She drinks coffee every morning, or you can say the earth revolves around the sun every day. For the indefinite, she really enjoys playing the piano. Water always boils at 100 degrees Celsius. Okay, great, great. Thank you very much. Yes, Mr. Okas. I always go to my office in time. I often get late. Usually, I reach at office at 11 a.m., 11 o'clock. Uh, normally, I get late 5 minutes, 5 to 10 minutes. Sometimes I have to get more late, more than routine. I occasionally skip my timing to go office. I rarely await any holiday, any off, and it never happened that I take any off without intimating them. Oh, thank you. Yes. Yes, great. Yes, Ansar. जी Ansar. There is some sort of internet issue at your end. Okay, now coming towards the negative, इसका हम negative किस तरह बनाते हैं? Okay, negative is also simple. पर क्या है कि do या do not या don't कहाँ लगता है और does not या doesn't कहाँ लगता है?
So yes. Okay, yes, Mr. Mustafa ji, let me unmute you. जी जी सर, ये कुछ जिस तरह मेरी वर्ड है सारे डेफिनेट टाइम एंड इनडेफिनेट टाइम के, हम जी जुमले सेंटेंस के शुरू में बिफोर द वर्ब एंड द लास्ट वी यूज कैन यूज ऑलवेज, वी इस तरह ऑलवेज सम वेयर मास्क, जिस तरह सर वी ऑलवेज वेयर फेस मास्क, जी ऑलवेज वी वेयर फेस मास्क, ठीक है सर। पर अगर ऑफन का यूज करना हो तो हम शुरू में इसे वर्ब से पहले और आखिर एग्जैक्टली में ये सब चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये भी वही कल मैंने सॉरी लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था ना कि एडवर्ब्स जो है ना वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन गो हम कहते हैं। सो ये आप कहीं भी आप शुरू में भी यूज कर सकते हैं कि समटाइम्स दे मीट इन द मॉल, दे समटाइम्स ईट इन द मॉल, दे मीट इन द मॉल समटाइम्स। सही, तो जहां पर भी यूज करें मतलब सेम ही होता है इसका। सर इस तरह हम कह सकते हैं ना, आई गो टू द बाजार मार्केट ओकेशनली। जी जी, ये भी कह सकते हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर। My pleasure. Okay, now as I was saying कि ये क्या है कि हम अच्छा डोंट वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमने क्या यूज किया था, वर्ब की विदाउट एस ई एस फॉर्म यूज की थी। अब यहाँ पर देखें वर्ब की एस और ई एस फॉर्म हमने यूज नहीं की, किन किन के साथ, आई, यू, वी, दे एंड स्टूडेंट्स। सो इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, डोंट या डू नॉट यूज करेंगे। एंड एज फॉर सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के साथ ही, एंड एज फॉर सिंगुलर नाउन या फिर ही शी इट हो गया, जब इनके साथ हमने वर्ब की एस या ई एस फॉर्म यूज की थी ना, सो विद सेम सब्जेक्ट्स विल बी यूजिंग डज नॉट या डजंट। सही, फॉर एग्जांपल they play football, they don't play football, या they do not play football. She plays football, she doesn't play football. सही। सो एंड वन मोर थिंग इज कि जब यहाँ पर डोंट के साथ तो बेस फॉर्म लगेगी, मतलब कि विदाउट एस या ई एस। जब यहाँ डज नॉट आ जाएगा तो उसके साथ भी जो है ना हमारा वर्ब का जो एस या ई एस फॉर्म होगी वो हट जाएगी। सही, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, क्योंकि वो जो वर्ब की जो एस या ई एस फॉर्म होती है वो डू पर आ जाती है एंड डू बिकम्स डज। सही, सो आई प्ले फुटबॉल, he plays football. I do not play football, he does not play football. Right? So we are also given examples here. I don't often drink coffee. We don't usually wear face masks. Rose doesn't always take leaves. She doesn't clean her room. They don't reach in the garden. Ram doesn't study in the hostel. Yes, good one. Yes, Miss Aisha. Okay. अच्छा चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बाद में जाएंगे, फर्स्ट गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वंस जी। सो नाउ आई वांट यू टू मेक अ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव एंड देन चेंज इट इनटू नेगेटिव, स्टार्टिंग विद यू मिस्टर उस्मान। Yes, sir. I speak truth. I don't speak truth. Good. And also use another verb of s या es, या फिर ऐसा सब्जेक्ट यूज करें जिसके साथ s या es वर्ब लगता है। He speaks truth. He doesn't speak truth. Good, good. Thank you. Okay, yes, Mr. Okas, your turn. Okay, sir. He doesn't speak truth. He usually wears mask. ये तो वैसी चीजें लिखी हुई है। Okay. So make your own sentence. Yes. Sorry, sir, I couldn't get it properly. Okay. Maybe a little later. ओके ओके चलिए ठीक है, मैं फिलहाल किसी और जी मिस आयशा। Sir, she enjoys her life. She does जी not enjoy her life. Does she enjoy her life? ओके गुड They एंड they यस go outside. They do not go outside.
Do they go outside? Good, good. Thank you very much. Yes, and Ms. Uzaila. Yes, Ms. Uzaila. Can you hear me? Okay. Yes, sir. They play table tennis in the park every afternoon. Mhm. Do they play table tennis in the park every afternoon? No, they don't play table tennis in the park every afternoon. Okay, good. And about the SES, अभी जो है ना SES वाले भी बता देंगे Ms. Uzaila. Like I have to use the singular Yes, yes, you have to nouns. use singular nouns for subject. Yeah. Okay. Really. John does work as a teacher. Does John work as a teacher? No, he doesn't work as a teacher. Okay, good. Thank you. Yes, and Ms. Madiha. I drink water. I do not drink water. He drinks water. He does not drink water. So yeah, good. Thank you. Yes, you see कि these exercises, this one is simpler. ये present simple जो है ना, because if you remember in the childhood कि सबसे पहले जो sentence हम सीखते थे tenses में बनाना, so it used to be present simple या present indefinite. So these are simple ones. Yes. Yes, sir, Mr. Ansar, can you hear me? Okay, so for now going towards Mustafa. जी Mustafa, जी sir. you kindly make a sentence. Yes sir. She takes tea twice a day daily. Good. She takes tea twice a daily. Yeah. She she take she does not take a tea twice a daily. Twice a day. Daily, twice a day. सर डे कर सकते हैं. Twice a day. जी daily या तो आप हाँ कहेंगे twice कि a she जी या तो आप कहेंगे कि she takes tea daily या फिर she takes tea twice a day. सर अगेन वापस से. She takes a tea twice a day. She Okay. doesn't take tea twice a day. Does she take Yes, yes, good. tea twice a day? ठीक से. Good, एक और. good. Okay, now, yes, yes, thank you. अच्छा, Mr. Waqas, if you could give me an example, it will be better. अगर अभी भी नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको समझा दूंगा. जी. सर मुझे ये लगता है ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये ठीक हैं। मुझे जी. ये नहीं समझ आई थी कि मेरा टास्क क्या है, मैंने इसमें क्या करना है। अच्छा, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपल टेंसेस ही बनाने हैं. देखिए जिस तरह यहाँ पर आपने बनाए थे ना सेंटेंसेस, सही है, और जी यहाँ पर जी हमने टेंसेस किस तरह बनाए थे कि आई, यू, वी, दे या फिर जो प्लूरल हमारे पास नाउन्स होते हैं तो उनके साथ हमने वर्ब की सिंपल फॉर्म लगाई थी, एस या ई एस फॉर्म नहीं लगाई थी. जबकि ही, जी शी, जी इट हो गया या सिंगुलर नाउन हो गए तो उनमें वर्ब की एस या ई एस फॉर्म लगाई थी. जिस तरह के दे प्ले, शी प्लेज. सही. सो इसी तरह अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव का बताया गया है. सही है कि वही सेंटेंसेस है लेकिन उनको नेगेटिव में चेंज करना है. तो जब आप नेगेटिव में चेंज ओके करेंगे तो जी आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ आप डोंट या डू नॉट लगाएंगे और ओके बेस सर फॉर्म ऑफ वर्ड. जी. और इसी तरह ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डजंट लगाएंगे और बेस फॉर्म ऑफ वर्ड. बेस फॉर्म मतलब कि ऐसे ई राइट एस फॉर्म कोई नहीं देगी. जी. राइट अभी सर आप जी आपने एक जुमला बनाना है, एक या दो सेंटेंसेस, एंड यू हैव टू चेंज दैट सेंटेंस. अच्छा, एक जुमला आप डोंट का बनाए, सही है, एक सेंटेंस जिसमें बेस फॉर्म यूज हो और उसे आप डोंट में चेंज करें. फिर दूसरा जिसमें एस या ई एस फॉर्म यूज हो उसको डजंट में चेंज करना है आप. जी. ओके जी ओके। I often take tea after my meal and Good. he doesn't like to
come office in time usually, and Mhm. Good. you don't finish your class within time. Usually, they always finish Always. their work within time. Sorry, they Okay. don't finish सही their है, work हो within जाएगा time. जी। सही है, चलो, thank you. Okay, now proceeding ahead. अच्छा, yes, with the question. So question भी simple ही है, सही? जिस तरह के time and again I keep telling you that you have to start your question with helping verb या auxiliary verb. So in this case हमारे पास helping verb जो है वो do और does है, सही? So हम अपना sentence जो है ना, जिस तरह हमने ऊपर I, you, we, they और plural nouns के साथ हमने don't लगाया था ना, तो don't या do not. So same is the case here. I, you, we, they या students के साथ do आएगा. Do, then subject and then the base form of verb, the rest of the sentence. And same is the case here कि he, she, it's, Sarah या sorry singular noun के साथ doesn't आएगा, मतलब does not. So when you change those sentences, those subjects into question tenses, तो उसमें आप does पहले लगाएंगे, he, she, it या singular noun के साथ does आएगा, does, then the subject and then the rest of the sentence. सही है? So they play cricket, they do not play cricket, do they play cricket, she plays cricket, she doesn't play cricket, does she play cricket, इस तरह आपने करना, सही? Since we are given also examples here, I sanitize my hand, do you sanitize your hand, that girl disturbs me every time, does she disturb you every time? I love to drink mojito. Do you love to drink mojito? Mojito is, by the way, Mexican drink, जिसमें जो है ना नींबू शामिल होता है, sort of lemonade. Right? So Emasha always wears beautifully. Does Emasha wear beautifully? So yes, I want all of you to make a tense of simple present and then change this one. इसमें से आप लोगों में से Miss Ruzaila, Miss Aisha आप लोगों ने तो बता दिए थे. So yes, I'll be going with Mr. Osman. तो आप लोगों ने simple present के जुमले बताने and positive and then you have to change into question tenses. जी. Sure. I prepare my lesson. Do you prepare your lesson? Do you clean your shoes? Yes, good, good. And You don't clean your shoes. yes, and also make a She tense of does. जी. He does prepare 6 books for his exam. Does he prepare his 6 books for his exam? Yes, ये वाला सही है, but इसमें जो आपने उसको बताया ना positive tense, so you can simply say कि he prepares his books for exams. He does prepare me, simply he prepares his book. जी, सही है, thank you. Okay, now Miss Madiha. Yes, sir. I go to school. I do Yes. not go to school. Do I go to school? Good. He goes to school. He does not go to school. Does he go to school? Good, good. See you. Thank you very much. Yes, and Mr. Okas. Do I sanitize my hands every time? Does the girls? Yes, sir. So try to make your own Does the sentence. girls disturb me every time? सही, लेकिन कोशिश करें कि खुद से एक सेंटेंस बनाएं पॉजिटिव में और उसको फिर क्वेश्चन टेंस में चेंज करें. फॉर एग्जांपल जिस Yes, sir. तरह मिस मदिया ने बताया कि आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, इस तरह. Yeah. Okay. So if you change the slide here for you, इससे आपकी हेल्प भी होगी जी. Okay. Yeah. Do we believe
in the preachings of Islam normally? Do we believe in the preachings of Islam always? Do they think that they should come? Sorry. Do they always prepare their work before time? Do students often try to understand the things taught in the class? Yes, and अभी एक 10 का जुमला ही बता दो. Yes. Okay. Does he always try to understand the things taught in class? Okay. अभी इसी sentence को जो है ना, try to change it into positive. Okay. Yes. Does Harish often takes a break during study? G, same. Okay, yes, thank you very much, Mr. Utas. Now going towards, yes, Mustafa. G, Mustafa. जी सर. Yes, so जिस तरह हमने tenses बनाए आपसे पहले, so इस तरह आपने, you have to make tenses, you have to make first positive tense and then change it into interrogative, question tense. Yes. Both Yes, of sir. do and does. I'm- Yeah. I am ready, sir. Sun rises in the east. Does sun rise in the east? Good. Sunsets in the west. Sunsets in the west. Does sunset in the west? You speak truth always. Do you speak truth always? We play cricket every day. Do we play cricket every day? Say thank you. Thank you, sir. Yes, okay, now going towards. Yes, so now we are given 3 functions of present simple. इसमें 3 functions कौन से हैं? So the first one is talking about activities या habits. सही है? Daily activities या habits. The first function is कि हम जब भी कोई काम daily basis पे करते हैं या habitually करते हैं, so हम क्या बताते हैं उसके बारे में जब भी हम बताते हैं, we use present indefinite या present simple tense. And the second function is to talk about general truths. General truths का मतलब ये है कि we actually talk about scientific facts. कि जितने भी scientific facts है ना, साइंस के हवाले से facts, for example, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, so ये fact change नहीं हो सकता. सही है? पानी जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ये fact change नहीं हो सकता. सही है? वो facts जो change नहीं होते. सही? Yes. So those facts that cannot be changed, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको भी हम यूज प्रेजेंट सिंपल के जरिए ही बताते हैं. And the third one is for instructions or directions. जब कोई आपसे instruction पूछता है, direction पूछता है, so you use present simple tense to tell them the instructions or directions. Yes. This water is tasteless, yes, like this. अच्छा जी. So okay, now इसमें जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, you are also given examples here. उसके हवाले से मैंने already activities, sorry, habitual activities का मैं बता चुका हूँ. आप लोग ये examples दे चुके हैं habitual activities की. Now talking about general truths, कि water freezes at 0 degrees centigrade. के पानी जो है ना वो 0 degree centigrade पर जम जाता है. The earth revolves around the sun. कि दुनिया जमीन सॉरी दुनिया जो है या जमीन जो है वो सूरज की ओर घूमती है. Water boils at 100 degrees Celsius. कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है. A magnet attracts iron. कि मैग्नेट जो है ना मगनेटिस वो आयरन को लोहे को खींचता है. The sun rises in the east. जी मुस्तफा ने एग्जांपल दी थी. Yes, time moves forward. ये भी अच्छी एग्जांपल है कि वक्त जो है ना आगे ही दौड़ता जाता है. And as for instructions, so
let's say कि I asked you for the instruction और तो आप क्या कहेंगे कि take a right at the junction. Junction मतलब कि वो जगह जहाँ पर दो सड़कें मिली होती हैं. तो जंक्शन पे मिली हुई सड़कों की जगह पे आपने राइट चले जाना है. Walk along the street, go past the church, open the window. So ये क्या है, जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, जगह बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई काम करने को बोलते हैं. So in that case, you use present simple tense. So I want you to give me 3 examples, one from each, one from daily activities and habituals, second one from general truths, and the third one from instructions. Yes. Yes, 2 plus 2 makes 4. Okay. Yes, Ms. Rosales, starting with you. Sir, like I have to talk about the 3 types, Yes. you like don't have talking to- about you the have to- daily activities. Yes, you have to give one example from each type, from each function. Okay. Yeah. For the daily activities and the habitual, I always study 2 hours a day. For Okay, good. general And now truth, if you freeze Yes, the yes. water, it becomes ice. good. And as for the And for instruction or instruction, direction, think before you do anything. yes, think before you do anything. Yes, we can say instruction, advice, or direction. Good. Yeah, thank you very much. Okay, and Ms. Madiha. Okay, Ms. Aisha. Yes, sir. Instruction. Sir, here I use the Yes. phrase or I use my own words. You have to use your own words. It's up to you. Just like You I just can have to say either to give. my kids, take a bus and go to school. Is that right? Yes, yeah, just like, yeah. And what Take a about bus and go okay, to give school. me now go to school. Yes, and now for general truth. And the earth orbits the sun. Good. And for the daily activities or habits. Daily activities are a lot, but here I will describe. I do exercise regularly. Okay, good. Thank you. Yes, yes, Ms. Madiha, now it's your turn. Yes, sir. जी सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी. सर क्या करना है इस एक्टिविटी में, मुझे थोड़ा बता देंगे? तो अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि जो पहली मैंने उस आप लोग को प्रेजेंट सिंपल की 3 फंक्शंस बताए, सही है. तो पहला फंक्शन क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस हमें बताते हैं डेली एक्टिविटीज के बारे में. कि जब भी आप कोई डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आपको बताते हैं उसके जरिए, ये प्रेजेंट सिंपल के जरिए. दूसरा क्या है, जनरल ट्रूथ्स, कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं है, तो वो भी आप प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं. तीसरा है, जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, नसीहत देते हैं या फिर डायरेक्शन बताते हैं, तो वो भी आप प्रेजेंट सिंपल के जरिए ही बताते हैं. जी, सो आपने इन तीनों में एक एक एग्जांपल देनी है मुझे. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद डेली एक्टिविटी. Yes, or you can also use the negative in daily activities. I offer prayer daily. Yes, good one. Yes. And what about Next. general truths? Honesty is best policy. Sunset in the west. Yes, honesty. Yes, honesty or that is not actually scientific fact. ये जो है scientific हकीकत नहीं है, सही जी. Sunset in the west. Yes, good. Charity beings Sunsets at in the home. west. No, even that is not quite much scientific fact. मतलब कि वो चीजें जो कि साइंस के जरिए प्रूव हुई हो, जो कभी भी बदलती नहीं है, सही. Okay. Yeah. And what about instruction and direction? Shut the door.
Okay, shut the door. Good. Yes. Thank you. Yes, and now Mr. Osman. Yes, sir. From daily activity, my teacher comes on time to take his class. For general truth. Since human needs oxygen to breathe, Good. and instructions always walk on the footpath. Okay, good. Okay, now, yes, Mustafa. Yes, sir. जी, तीनों में kindly से give एक-एक me करें सर जी? examples. जी, जी, सर. तीनों में से एक-एक First, बताना है. sir, first all हम take about daily activities. Yes, exactly. I walk every day in the night. Good. And second one about, yes, general truths. The general truth, sir. Mother loves their children always. Yes, but it is not. Water keep its level. Okay, good. Yes, and Sir, for water keep instruction its in level. direction. Yes, water keeps अच्छा its सर. level. Yeah. सर एक रहता है सर, एक और रहता है, जरा ये बता दूं पहले. जी, The जी. moon takes a light to the sun. It सर takes जनरल light. ट्रूथ के अंदर ये ठीक है. The जी, moon जी, ये takes ठीक है, but a light the to the moon sun. to the sun is from the sun. ये सूरज से रोशनी लेता है. जी. From the sun. जी, जी, जी. Yes. सर एक रह गया. Yes. Take right at the walk onto the street. Instruction या direction बताना Purpose, है. the church, direction. Take right. सर सॉरी, अभी बनाना पड़ेगा, फिर टाइम लगता है. सही है, चलिए. Meanwhile, I'll ask. ठीक Yes. सर जी. जी, सही है. Okay, thank you. Okay, yes, Ms. Fazale, did you do these activities? Yes, Ms. sir. Fazale? I was the first one Oh, to do it. okay. Chalo, thank you. Yes, Ansar. Why he's not available at the moment? Actually, it's proceed ahead. The things we do and don't. सही. तो इसमें आपने क्या करना है? You have to make the same sentences, but you have to show कि आप कौन सा काम करते हैं और कौन सा काम नहीं करते. And you have to make these sentences, join these two sentences using but या while. अच्छा, इसमें क्या करना है कि पहला अगर sentence है, if you are using positive in the first sentence, you have to use negative in the second sentence after but या while. For example, कि I don't go to gym, मैं gym नहीं जाता, but लेकिन my friend often goes to gym, लेकिन मेरा दोस्त जाया करता है. या फिर I don't go या I go to the gym, but my friend does not go to the gym. तो एक ही ना एक में से आपने do not या does not लगाना ही है, सही. क्योंकि एक में आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और एक में आप नेगेटिव की बात करते हैं. एंड व्हाई इज दैट? जब भी हम बट या while लगाते हैं, इवन किसी भी लैंग्वेज में, सही, कि मैं ये काम तो करता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं करता. इस तरह हम बोलते हैं ना कि मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन मैं पानी बहुत कम पीता हूँ, लेकिन मैं पानी नहीं पीता, सही. तो जो बट या while है, ये असल में क्या है? इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट. ये जो है ना, ऑपोजिट पैदा करता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है. सो kindly give me one example each and then we have to, yes, you have to watch a video also then. जी Miss Aisha, one or two examples. Sir, today I'm getting bored by taking this class. It's so simple. Yes, actually it is simple. However, इसके बाद थोड़ी हमारी video activity है. जी. Because as I said you earlier, and even the sentence is simple present. That's why it's Yeah. simple. Yeah. Yeah. Because we are used to do some creative things over here, so. Yes, we have some creative activities at the end. जी. Okay, I don't want to eat pizza. And But you can say but yeah, while. okay, I don't want to eat pizza,
Because I am getting fat because of it. No, no, इस तरह नहीं करना. You have to use but या while, and in both sentences you have to use simple present. Okay, I okay, don't- okay. Yeah. Now I get it. I don't want to eat pizza, but I want to eat fries. Good. Thank you. Is it okay? Yes. Yeah. Okay. Yes, Miss Zaila. So, sir, I go to park every day for a walk while my sister sleeps at home. I love watching horror movies, but my brother fears them. Okay, thank you. Yes, Mr. Usman. So, I like to go for picnic, but my father don't like to go for picnic. Okay, good. Yes. It could be He- reason why I'm he telling you. So, okay, let me just unmute you again. Ji, Mr. Usman. Ji, So while continue. की थोड़ी while की थोड़ी सी understanding चाहता था. जी. He usually cleans her room while usually cleans her room Mhm. while cleaning the clothes. While cleaning the clothes, but you see कि आपने दोनों ही जो है ना present simple tense use करना है. जी. So while का concept हम कैसे देखेंगे? But का तो मुझे confirm हो गया. अच्छा. But लेकिन while जब के सही. ठीक है. Yes. मतलब कि अच्छा let me clarify a bit more. But जब हम यूज करते हैं लेकिन, तो हम ये बताते हैं कि यहाँ पर तो ये काम हो रहा है, लेकिन इसके बरअक्स कहीं और जो है ना एक दूसरा काम हो रहा है. अब while का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और इसी के साथ इसी दौरान while कोई दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है या वही बंदा एक और काम भी कर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं. सही. I'm eating pizza while my brother is eating pasta. Good. Okay. Yes, Miss Aisha. Sir, I want to give the suggestion to Usman while listening music. She is cleaning his room while listening music. Okay, good one. Yes, good one. Okay, yes, Miss Madiha. Yes, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी. I do not like contact more people, but my husband like contact more people. जी किस तरह फिर से बताएं. I do not like contact more people. मैं ज्यादा लोगों से राब्ता रखना पसंद नहीं करती. But my husband like. जी. But my husband likes contact more people. और ज्यादा लोगों से राब्ता रखना पसंद करते हैं. सही है सेंटेंस? सर आवाज आ रही है? हेलो सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Aisha, can you hear me? No, sir, I can't hear you. What about now? Now I think. Speak Yeah. again. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, Chane, go to Miss Madhya. Thank you. Yes. Okay, let's continue with the video for now. Acha. So yes, listening to the happiness of people, let me share
my browser with you. So share the sound as well. बस अगर आपको कोई आवाज ना आ रही है तो काइंडली टेल मी मेरी वीडियो की आवाज आ रही है. Hello, lovely English learners. Hello, lovely English learners. Back again in London. I'm loving it here. It's great. It's a good place to go and interview people. Lots of wonderful people. Yeah, welcome if you haven't seen the channel before. I just go around interviewing people so you can. Starting from the beginning. Hello, lovely English learners. Back again in London. I'm loving it here. It's great. It's a good place to go and interview people. Lots of wonderful people. Yeah, welcome if you haven't seen the channel before. I just go around interviewing people so you can see how native English is really spoken, or any English really. It's all good. So today I'm going to be asking people what makes you happy. So let's get to it. What makes you happy? Art. Art, okay. Yeah, the sun. Nice. And the sun. There's some points right there. Yeah. What makes you happy? Sweets. Just sweets? Just sweets. No, I'm joking. Like a lot of things, but like if you have to put me on the spot, it would be sweets. Okay, Yeah. I like it. Very good. Anything else? What makes you happy? People, life, Yeah. everything. Being gifted every morning, waking up. You know, just to see, smell, taste, and hear. That's what it is. It's about life, man, and people. Yep. Not everyone is not everyone, but a lot of people. You know, there's people that make your day. Yep. So you know, but that's what makes me happy. I appreciate it. And you've No helped to make problem. my day as Thank well. you very much. I appreciate it. What makes you happy? Sunny days for sure in nature. So today, are you happy? Yeah. Very I think much. my friends make me happy. Oh, did you hear that? Aww. So friends with Brilliant. with sunny days. Of course, yeah. So today, extra Yeah. happy. Like Perfect. little pleasure of life. And what kind of art? Paintings, Okay. especially museums, to look around and explore new things. Good. Well, there's lots of that to do in London, isn't there? So, What makes me happy? I'd say having food in my belly makes me happy. Having a roof over my head yeah. and a girlfriend, also something that makes me happy. Good. Yeah. Good answers there. Good. Well, thank you very much. I appreciate it. Anything else at all to add about happiness? I think it's extremely important to be happy, and sometimes I think we overlook taking happiness even out of the little things. Definitely. But I yeah. like that. It's quite profound. Thank you. Very nice one. Anything else at all to add about happiness or under? Take care of yourselves. Lovely, I appreciate it. Thank you so You're much. welcome. And yourself, what makes you happy? Gymnastics. Gymnastics? Yes. Amazing. Do Yes. you do gymnastics? Yes. Cool. That's awesome. Well, thank you both. I appreciate Thank it. you. Ευχαριστώ πολύ. I think the sun and music. Sun and music, that's really big. And yeah. Good cocktails. A good cocktails, yeah. You can get all those things today, I guess, in one because it's sunny. Yeah, we Yes, do. we're really having it. So Yeah. we were just talking about having good cocktails. Yeah. Awesome. And just a curveball. It's a slightly different question. What makes you happy? That's a really interesting question. Making other people happy. Yeah. For me, yeah. I think. Spending time with people that make me happy and like being able to do something for someone that I care about and like seeing them happy, that makes me happy. Awesome. Peace of mind. Simple as that. If I have equilibrium from the inside, I can project that on the outside. Nice, I like it. That's an interesting one, so that's a good one. Yeah, happiness comes from within. Perfect. Anything else to add about happiness? Last question. Buy vinyls. By finals. Vinyls, like the vinyls you can listen to. Vinyls, Yeah, buy yeah, vinyls, yeah. sorry. Buy vinyls. Vinyls are so old, I didn't even know what you're talking Yeah, about. no, Of course. it's really Buy nice to be busy with your music, and it makes you a lot happier when you have
beautiful finals. So we bought 2 today, so it's going to be I read a lot of books. Awesome, that's great. Thank you, Vel. No problem. Okay, so going back to the slide, I have 2 questions here for everyone. Okay, the first question is, what sort of art does the girl like? इसमें से एक लड़की थी जिसकी तरफ कैमरा ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया था. So she talked about that art makes her happy, and she told about 2 sorts of arts. So what were those? Can anyone name those 2 arts? Those 2 types of arts? Ji. Yes. Ms. Fuzaila? Sir, I guess paintings and museums. Exactly. Yes, exactly. Paintings and museums. And could you tell me what is a vinyl that the couple was talking about? It was a type of music that makes them happy. It is like a comfort zone for them. Yes, but quite closer, but not actually 100% close. Let's चलने की question किसी और से पूछ लेते हैं. Thank you very much, Ms. Fuzaila. Yes, Ms. Aisha. Yes, sir. Yes, Sure, so could you she tell was me? talking about the art of painting and museum and Yes, museum. Yes. I don't know about the word vinyl. I listen it. Okay, fine. Okay, चलिए ठीक है. I will tell you in the end. Okay, thank you very much. Yes, Mustafa. Ji Mustafa. Okay, Ms. Nadia. Yes, Ms. Nadia. Mr. Osman. Yes, sir. Yes. So they were Yes. so they was talking about vinyls makes them happy because they also like the music. Vinyls means I think plastic product. Which type of Yes. is that? So vinyl is I think is a tool that records the things. Yes, actually, it is an instrument, right? Yes, sir. आप This लोग is को an ये instrument yes, that records music, and they usually use this and makes them happy. exactly. And you see यहाँ जो ये picture दी गई है ना ये disc की, so these Yes, sir. are vinyls. Like in the Yes, older sir. times, people used to hear music on these vinyls. अगर आप लोग को याद हो उसके ऊपर एक ये बाजा सा भी लगा होता था और उस पर जो है ना एक ये needles रख दिया करते थे on these vinyls Exactly. किसी disc पर CD पर जी black color की Yeah, होती थी सर बड़ी सी. Yes. this is an analog sound storage medium. Exactly. Yes, it was. I think it belonged We- to. Yes, it belonged to Yes, sir. 20th century. Yeah. Yes, sir. We use digital sound storage devices nowadays, like on mobile phone Yes. or our MP3. But this is an analog type of storage device. Exactly. Yeah. Exactly. Yes. And even कि अभी भी कुछ अमीर लोग होते हैं जिनके पास ये चीज पड़ी होती है, but वो शौकिया रखते हैं. ये. जैसे वो थ्री इडियट्स में वो प्रिंसिपल ने रखा हुआ था वो शेप करवाते हैं. Exactly. Yes. जो जी जब भी शेप बनाते हो वो वही फिर vinyls डालते हो. So yes, thank you very much. That was quite accurate, Mr. Swan. Thank you very much. Okay. Yes. So now. Okay, for now I'm skipping this exercise here because इसमें भी जो है ना you have to make tenses. तो ये थोड़ी सी complicated है अगर if we have time enough. So मैं आपको तो आखिर में समझाऊंगा because in this one even you have to make the same sentences. Okay, when वाला ये भी इसी की तरह examples है क्योंकि जो हमारी main exercise हैं those that are interesting one तो वो मैं आप लोग को पहले करा रहा हूँ सही. So yes, inshallah, these 2 exercises will be doing these at the end. Yes, and as for this one, this is the reading exercise.
for pronunciation. G, Mr. Usman. Kindly read this paragraph. Yes, sir. Sarah's morning routine. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoys it on the balcony, listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. She leaves for work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives precisely on time. Okay, good. Thank you very much. And Mr. Usman? Yes, Miss Aisha. Sarah's morning routine. Every morning, wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. Brews green tea and enjoy it on the balcony, listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries. She leaves for work by 7, catching the train that always arrives precisely on time. Okay, great. Thank you very much. Yes, Ms. Fuzaila, are you there? Okay. So first of all, sir, I would like to tell that I will pronounce it Sarah as Sarah because of the British pronunciation. Okay. Oh, okay. Yes, Every morning, Sarah wakes up. yes. Did you carry on? Oh, you can Carry continue. on. Okay. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoys it on the balcony, listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. She leaves for the work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives precisely on time. Okay, thank you very much. Yes, Ms. Nadia, kindly read this paragraph. Yes, sir. Sarah morning routine. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoys it on the balcony, listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. She leaves for work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives precious on time. Okay, good. Thank you very much. Yes, Mustafa. Sir, G. So kindly read this paragraph, Mustafa. Sarah's morning routine. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoys it on the balcony, listening to the bird chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. She leaves for we by 7:30 a.m. Catching the train, they always arrive precisely on time. Good. Thank you very much. Okay. Yes, Ansar. Sir, every morning, Sarah wakes up before sunrise and reads on her Yes. yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoy it on the balcony, listen to the bird chirping.
After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast. I usually oatmeal with bread and nuts. She leaves for work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives preciously on time. Okay, well, thank you very much. Acha, now listen closely. So, one thing in American English we call it Farah, while in British English we call the name Sarah. So I'll pronounce it in British accent, of course. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoys it on the balcony. Yes, on the balcony, listening to the birds chirping. Okay, so this word is chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. This word is breakfast. She leaves for work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives precisely on time. Yes, and yes, now for the activity that Ms. Aisha suggested. So yes, I'll ask the same question from you, Ms. Aisha. What makes you happy? G. Sir, continuous rain, especially in winter, makes me happy. And air condition in summer season. My kids and their innocent acts make me happy always. And crystal clear royal blue clouds always makes me happy. And the early morning routine, to wake up early morning and to go outside for a walk. So I get pleasure. So I think if I were to sum of whatever makes you happy, that will be nature in one word. Right? Because Yes, nature sir. things, yes, things related to nature makes you happy. Mm. Okay, thank you very much. Yes, the same question from Mr. Osman. Yes, Mr. Osman, could you tell us what makes you happy? Yes, sir. I love to travel, and traveling makes me happy. I explore a lot of areas in southern Punjab, and also I like to go northern areas of Pakistan, where I feel very happy on these places. Okay, good. So you like traveling. Traveling makes you happy. Exactly, sir. Okay, that's great. Thank you. Yes, Mustafa, Mr. Mustafa, could you tell us what makes you happy? Yes, sir. I have a summer vacation a lot. Hence, I go bed late and I wake up late. Okay, I and don't activities. I have don't activities in the morning. okay, so okay. Yes, so I think sleeping makes you happy. Sleeping a lot. Yes, Mr. Mustafa. Okay. Thank you very much for the response. Yes, Ms. Madiha, could you tell us what makes you happy? Yes, sir. Yes. So could you tell us what makes you happy? सर क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब कि आपको कौन सी चीज खुश करती है? खुशी आपको किन चीजों से मिलती है? यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है मिस नदिया, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कैन नॉट हियर सर मैं बोल ही नहीं रही अभी। अच्छा अच्छा, सही। जी, so could you share your happiness with us? सर मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या बताऊँ। अच्छा देख, नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। जिस तरह आपने वीडियो में देखा ना कि लोग मुख्तलिफ किस्म के रैंडम आंसर्स दे रहे थे,
even in here आपके सब आपके जो friends हैं सारे classmates हैं तो सारी जो है ना random answers है so it can be anything जी like for me as for myself I would say nature and working is my happiness जब मैं काम पे होता हूँ काम कर रहा होता हूँ I feel happy or when I'm in nature मैं कहीं घूमने फिरने निकलता हूँ so in nature so I feel happy so yes what do you feel happy and being in being at I feel happy when I spend more time with my family. And would you like to add something else? No, sir. Okay, Chalo, thank you very much. That was a good answer. Yes, and Ansar. Okay, Chalo, let's proceed ahead. Or in case अगर हमसे कुछ activities रह भी गई because we have 10 minutes left, 10 to 15 minutes. This will do it in the next class, inshallah. Yeah, acha. So this activity here about the rest. Sorry, this one. Yes, usual activity and now what's happening. So इसमें आपने क्या बताना है कि usually आप क्या करते हैं सही अच्छा इस एक्टिविटी में क्या है कि हमारे पास जो हमने पिछली क्लास के टेंसेस सीखे थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो भी शामिल हैं एंड वी आल्सो हैव प्रेजेंट सिंपल टेंसेस हियर so usual activities because we use present simple for to tell about usual activities or habitual activities उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले सेंटेंस आपका यूजुअल एक्टिविटीज के हवाले से होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे या यूजुअली आप क्या काम करते हैं या करती हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट कि अभी आप क्या काम कर रही हैं या इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आई ऑफन या आई यूजुअली वॉच इंग्लिश मूवीज कि मैं अक्सर या आई समटाइम्स वॉच इंग्लिश मूवीज कि मैं कभी कभार इंग्लिश फिल्में देखता हूँ बट नाउ आई एम वॉचिंग एनिमल डिस्कवरी लेकिन अभी इस वक्त मैं एनिमल डिस्कवरी देखता हूँ सही My sister never reads books. मेरी सिस्टर मेरी बहन कभी भी किताब नहीं पढ़ती but now she is reading a novel. लेकिन इस वक्त वो नॉवल पढ़ रही है सही so you have to make some 3 sentences like these. Okay, let me just unmute you, Miss Aisha. Ji, Miss Aisha, can you hear me now? Yes, sir. Your voice So getting activity. slow meanwhile. Okay, okay. So did you get the activity? Yeah, I can. I often watch English movies, so here I will use I often go for walk, Yes. but now I'm just resting. Okay, okay, thank you. And make 2 more sentences. And my son never write. My son never want to write, but he is very good in reading. Okay. If he is very good, or you may use present continuous tense here. But now he is Okay. trying to write, you can say, yes. Okay, now he's trying to write. Yes, okay, thank you very much. Yes, coming towards Miss Madira, Ji. जी सर So activity की सर समझ आ रही आवाज है नहीं आ आपको? रही नहीं सर अच्छा। आवाज नहीं आ रही थी अच्छा चलें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि जो पहला बॉक्स है ना अभी इसमें सारे प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस दिए गए हैं So ये जो आज हमने सीखे while in the second box we are given the tenses of present continuous ये जो है ना आपके जो डे 13 था ना present continuous तो उसके tenses दिए गए हैं अब ये क्या करना है आपने इस तरह बताना है कि मैं जो है ना मैं रोज पौधों I water the garden daily but now I am growing a plant कि मैं वैसे तो है ना रोज पानी देता हूँ लेकिन आज जो है ना अभी इस वक्त मैं पौधा उगा रहा हूँ तो पहला टेंस जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल का हो गया आपका और जो नेक्स्ट था बट के बाद वाला टेंस वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो इस तरह की आप मुझे 2 एग्जांपल्स दें जी
Yes, Miss Madina. सर मैं थोड़ी देर में जवाब देती हूँ आपको चैट चलिए बॉक्स सही में. है. You think meanwhile, जी. Meanwhile, I'll ask Mr. Osman. जी, Mr. Osman. I hope you got the activity. Yes, sir. Sir, I often like to go for picnic or dinner on weekend, but nowadays I'm facing difficulties in my family. Uh, we don't like to miss our class, but today I was busy in the start of this class. I was busy. ठीक है, वो busy Yes. है. I understand. Yes. Okay. चलिए. ठीक है सर, मैं थोड़ा सा मुझे प्रिपेयर करता हूँ. Okay, चलिए ठीक है. Meanwhile, I'll ask Mr. Mustafa. जी, Mustafa. Yes, sir. Often I watch English play, but now, like in TV, I आपकी ठीक है आवाज सर. थोड़ी कट रही है. आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी. नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है. चलो चलिए एक काम Yes, करिए. sir. kindly write this sentence. आप जो है एक सेंटेंस चैट बॉक्स में लिखिए. Yes, Miss Aisha, this one is good. लेकिन इसमें जो है ना आपने next में भी वो यूज किया है. I want. The main verb here is want. Concentrating जो है ना that is noun. That is not a verb here. सही. So it will be better if you use wanting. या इस तरह का ing form. Wanting तो खैर हम नहीं यूज कर सकते. Yes, Miss Madina, the rest is fine, but you have to use my daughter does not go to school, but she goes to tuition center. Ji. Okay, let me unmute you, Miss Aisha. Ji. Sir, it's not right sentence. I usually watch dramas, but now I want concentrating on English documentaries. It is actually correct, but here according to this activity जो मैं बता रहा हूँ कि the second sentence must be in present continuous. So इसमें जो आपका second जुमला है that is not in present continuous. बाकी sentence अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कहा है आपने. जी लिख रहा है. So sir, which kind of sentence is it? Actually It both is of not these present sentences. continuous. Both of these no. इसमें जो है ना want is the verb here. Concentrating is not the verb. Concentrating here is the noun. I want concentrating. Yeah, I just want concentration. Yeah, I want to concentrate on English. इस तरह. So both of these are actually the sentences of present simple. जी. Okay. Yes, Miss Nadia जी. Yes sir. So kindly एक sentence अच्छा आपने तो लिख लिया ना. सही है. Shall Yes, sir. good from your जी good from your side. And Mr. Osman. Can Mr. Osman Yes, sir. kindly give us an जी, example अच्छा of the ठीक and है. after that we'll be ending the class. जी. So I like to go for a walk in night, but now I am taking my class. Now, what was the first part? पहला part क्या था आपका? I like to go for a walk daily. Okay, I like to go for a walk. So good. सही है. जी good. Okay. Thank you very much, Osman. अच्छा. Okay, so now but the time is up. We don't have enough time. So हमारी जो activities रह गई हैं, this is the first activity. This is the second one. इसमें जो है ना I always check when I am free. हमें इसमें क्या बताना होता है
सिचुएशन के हम मैं कौन सा काम क्या करता हूँ जब ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये काम तब करता हूँ जब वो काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज चैट विद माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता हूँ या चैटिंग करता हूँ व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूँ बिल्कुल। शी ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करती है, घूमती फिरती है। व्हेन शी इज ऑन वेकेशन, मतलब कि एक काम का ताल्लुक दूसरे काम से बताया गया है, जुड़ा हुआ है। दे लर्न इंग्लिश व्हेन दे गो टू द क्लास, वो इंग्लिश सीखते हैं जब वो क्लास जाते हैं। सही। I show colors when I want to impress her. I didn't get the meaning quite much of that. अच्छा, he sometimes seeks for advice when he is in trouble. वो जो है ना मशवरे लोगों से लेता है जब वो कभी मुसीबत में होता है। Yes, but here, Ms. Aisha, you are using but instead of when. So, but जो है ना क्या है कि वो opposing quality शो करता है, उसके opposite की quality, जबकि when क्या है, when relation शो करता है एक टेंस का दूसरे टेंस के साथ। सही। Okay, yes, yes, Mr. Usman, this one is good. I am punctual when I am in my class. Good one. Okay, so अच्छा ये एक्टिविटी इस पे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। So in this one, यहाँ you can see कि in the upper bar यहाँ names लिखे गए हैं और आप लोग को names दिए गए हैं। You are given subjects हैं। उसके बाद बस, मोटर बाइक, ट्रेन, with friend, थ्री व्हीलर, इस तरह दिए गए। तो you can see कि अब names के नीचे जो अली है ना, अली का नाम ले लें फिर। उसके बाद बस का पोर्शन खाली है। अच्छा, मोटर बाइक के नीचे ऑफन लिखा गया है, फिर ट्रेन विद फ्रेंड खाली है और थ्री व्हीलर के नीचे समटाइम्स लिखा गया है। तो इसका मतलब कि आपने ये जो है ना दो जुमलों को जोड़कर लिखना है। सही। जस्ट लाइक दिस कि अली ऑफन गोज टू द वर्क ऑन मोटर बाइक, तो अली भी यूज हो गया, ऑफन भी यूज हो गया, और ऑफन किस में, मोटर बाइक में यूज हुआ। ओके, अली कभी कभार मोटर बाइक पर जाता है। बट ही समटाइम्स ट्रेवल्स बाय थ्री व्हीलर। अब थ्री व्हीलर के नीचे समटाइम्स, तो हमने क्या करना है कि थ्री व्हीलर से पहले हमने समटाइम्स ही यूज करना है, या थ्री व्हीलर के लिए हमने समटाइम्स, बट ही समटाइम्स ट्रेवल्स बाय थ्री व्हीलर, कि वो तीन पहियों वाली गाड़ी के जरिए ट्रेवल करता है कभी कभार। यस यस, सो इस तरह ये एक्टिविटी है। लेट मी टेल यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू एक्टिविटी। ओके, ये जो है ना दिस इज अ बिट ऑफ रोल प्ले एक्टिविटी। क्या बताया गया है कि यू गो टू अ रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड एंड ऑर्डर द फूड ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द वेटर। While waiting for the food, you discuss different types of food, drinks, and beverages. The waiter then brings you food, and you discuss the food with the waiter after eating it. So this is actually a role play activity, but we don't have time now. तो इसमें जो है ना तीन बंदों की ये एक्टिविटी है। तीन भी हो सकते हैं या ये बंदे, सारे बंदे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह के लेट से इसमें एक बंदा वेटर है और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, तो वो फूड ऑर्डर करते हैं। सही है। तो आपस में फूड के हवाले से बातचीत करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं। देन द वेटर कम्स, और उसको वेटर जो है ना वो फिर लिस्ट बताता है कि हमारे पास ये आइटम्स अवेलेबल हैं। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं कि वो फिर आपस में डिस्कशन करके अपनी अपनी मर्जी के आइटम्स बताते हैं। एंड meanwhile they also discuss the food, and after that waiter फिर से आता है और वेटर को जो है ना फूड के रिव्यूज देते हैं। सही। दिस इज हाउ दिस एक्टिविटी गोस। एंड एज फॉर दिस वन, तो ये तो सिंपल है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, एज फॉर द होमवर्क, अच्छा होमवर्क में इफ यू वांट टू डू दिस एक्टिविटी, तो ये इसी तरह की जिस तरह ऊपर मैंने टेबल वाली एक्टिविटी समझाई, मतलब कि you have to use these words, you have to join these words and make sentences. Right? Good one. Okay, yes, now I'm unmuting all of you if you have any questions. G. G, if you have any questions, you may ask me. No, sir, it was so simple class. Yes, yes, because of simple present tense. Yeah. सर जितना सिंपल है ना सर उतना ही यूनो कहने के प्रेजेंट है, लेकिन इसका यूज है भी टेक्निकल। इतना यानी कि हम कह लें कि बाजू का हम मिक्सअप कर जाते हैं बात सेंटेंस। जी जी जी, कैरी ऑन। सर जैसे कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा इससे ज्यादा क्लियर था, ये तो उससे थोड़ा सा टेक्निकल है। मतलब सिंपल है, ऐसा नहीं है कि सिंपल नहीं है। But Usman, we are not using for daily conversation.
Yes, of course, इसी तरीके से है. Yeah. Yes. Yes, so that is why I said हालांकि ये एक्टिविटीज है ना इन रेस्टोरेंट रोल पे ये मैंने आप लोगों से आज ही करवानी थी ये एंड कौन सी दिस वन बट चलिए ये I फिर जो have है ना just इंशाल्लाह विल I डू have a दिस request to you. Just when you are teaching us, so after a little breaks, you can take some creative things because the same lecture goes boring. Yeah, exactly. So, however, we'll try to do these two activities. Next, मैं classes start करूँगा कि उसमें इंशाल्लाह होंगी interesting activities भी होंगी और दूसरा कि ज़्यादा के time consuming ना हो इस तरह की activities short होंगी interesting और According कोशिश to ये me, होगी कि yes we should do this activity too because when we are getting bored, we are learning the same thing, so it was getting bored. So we should do little bit creative. yes. Yes, actually, this one was interesting. This restaurant activity. ये जो है ना, this was a natural, क्या कहते हैं, conversational activity. So that is why Exactly. we'll be doing it in the next class, inshallah. Yes. And sir, one more, if So you are yes, speaking, you should give us the chance to speak and clear the things. You are wasting your energy too much. yeah. Actually, हाँ, असल में ये slides में material इतना होता है कि I also have to do my part. Because क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ एक दो चीजें होती हैं कि if there is confusion तो फिर जाहिर सी बात है it means कि I am not playing my role to the next 100%. So that's Because why. I have here the chance to speak. Otherwise, we don't have the chance to speak. जी why not क्यों नहीं आप लोग को भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह जी We so want to speak. yes why not that is why उसमें मैं आप लोग को पहले बताया करता था ये vocabulary में कि you can use it in a conversation but actually it is a bit difficult for you so that is why I now tell you to make sentences हालांकि even now you can use those vocabulary and phrases in your own conversation I can take two people and you can do a conversation if you want to जी But actually, we don't know each other, so it gets difficult for them to create a situation like unknown persons. पहले से ही इंशाल्लाह I'll come up with Like, situation then. yeah. Yeah, so any If other someone question? is asking from us, so we Yes. can talk with. Yes, Miss Aisha. Sir, I'm saying if someone is asking some question just like these activities, so we can discuss it. But according to the words and vocabulary, it's little bit difficult for us to communicate with fellows. Sorry. But however, you can what you can do is you can just use it in your own head. You can just have a single monologue, or you can have a conversation with your own self. ताकि उससे क्या हो आपकी जो vocabulary हो ये फिर strong हो जाए तो that is one of those ways कि जिससे आपकी vocabulary जो होती है use में भी होती है और strengthen भी होती है जी. Exactly. So yes, any other queries or questions? Yes, sir. Hello. जी जी I can hear सर you. आवाज आ रही है. सर आपकी वॉइस का थोड़ा सा मसला लगता है मुझे कि आवाज कम रहती है बाकी जगह पे तो ठीक है पर कोई ऐसा नहीं होता थोड़ी आवाज ज्यादा हो अच्छा चलिए मैं कोशिश करूंगा आई हैव इवन दो आई हैव चेंज्ड माय हेडफोन्स आई थिंक ये मेरे कोई हो सकता है लैपटॉप से इंटरनल इशू बट आई विल ट्राई टू मेक improve it next time जी for the next time. मैं So वाईफाई the whole session we face this problem. अच्छा सही आई डोंट नो व्हाई असल में दिस इज एक्चुअली मेरा एक दूसरा लैपटॉप भी है सो आई एम वेटिंग फॉर दैट वन सो यस चलिए मैं ठीक है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग को ये किसी किस्म का भी इशू मेरी साइड से ना हो जी ये बस एक थोड़ी रिक्वेस्ट थी आप सही है definitely very much so I think the time is also up for चलिए फिर inshallah we'll see each other in the next class on probably Friday yeah okay so चलिए take care अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह inshallah so we'll see each other in the next class Allah Hafiz अल्लाह हाफिज़